स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
नमामि समीशाननिर्वाणरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं स्वरूपम् ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं ब्रह्मास्मि. So, yes. So, good evening, everyone. For all the people from India, good evening, and all the people out there from other time zones, good morning and good afternoon from wherever you have joined us. स्वागत है आप सभी का to your day of your questions and your answers. So, if we are ready, and you might have seen Haribhai is already enjoying the dinner, so that's why he has kept his camera off. On our behalf, he is enjoying, I believe. Okay. So as it is a question and answer session, so Haribhai, like people were seeing like you were sipping on the soup and people were laughing. I see. The entire battalion is there out there having their dinner out there. Okay. So you can see, I don't understand one thing. They went as a couple, but the females are sitting one side and the males are sitting on the other side. Chalo, let them enjoy. In the meantime, as a Wednesday, we should be having questions. Is there anyone who has a question for this day? Or you don't have any questions? No questions is a good thing for me. It's like I went to Jhansi ji school and she was saying, the students are saying even there is a fourth wave of corona. So without any examinations, if we can pass this time also, that would be great. So I also feel similar to that, I believe. That no questions, I will just pass this day. Okay. So very good. So we'll see each other for some time and then we'll move out. Right, Deepika ji? Very good. So let's see if we can sit like this. I can sit, you can sit or not is a question now. So we'll just, what a good day to meditate. I see. So you want to meditate. Okay. So Bhavani ji and her family out there. Good.
So if we so Sashi ji has raised her hand. Let's take that then. Yeah, Sashi ji, if you can unmute now. Pranam Manas ji. Pranam. First and foremost, thank you for the wonderful gift. Thank you for accepting. Thank you. एक्चुअली कोई और पूछ नहीं रहा था और मुझे लगा कि इस मौके का थोड़ा सा लाभ मैं उठा लूं और अपने मन की बात आपसे कहूं, और वो ये कि जो भी प्रोसेसेस आपने कराए, अब सच में वो मतलब वो टाइम और वो कैसे करने का मन ही नहीं करता, because it becomes as if you're breathing and things are just happening. So I just want to request you to enlighten me on this part. That's it. Thank you. Okay. So when the processes were given, you started doing the process and you did it well. And after that, now you don't even feel like doing the processes, right? This is what is happening. If you can just keep yourself unmuted. It is that exactly what is happening. It's like Manasji keeping a separate time for that process. I don't feel a need because it's just happening within me. I will not call that japa also because it's not an effort. It's just that जब आप वो जाप करते हो तो उसकी कोई फल की इच्छा करते हो, और वो जब आपको, मुझे ऐसा लगता है जब वो फल मिल जाता है तो वो एक रूटीन ना बन के वो आपका एक हिस्सा बन जाता है. So that is what we have been all working towards. It's not about knowing, it's about being. So when the processes, you are not doing the processes anymore, but you are being the process. So manifestation becomes very easy for you. Even you don't need to sit down there and do a certain kind of process after which you are going to get it. But it just happens. Yeah. So And इसके then, बाद मैं ये कहूंगी, what next? what मतलब next is, मेरी शायद ये रिक्वेस्ट ये थी कि अब यहाँ हो गए, अब आगे क्या, आगे बताओ ना. It might sound little greedy, but that's a desire. It's more a curiosity. It's more seeking towards that path. What next? many is coming. Many, you, the vessel that you carry would not suffice if I start giving. So things are coming. So be ready for that. Especially, I'll be introducing one more thing in the group shortly. Okay. So yesterday you all did Lakshmi Gayatri, right? Yes. So the next thing that will be coming, not sure if it is only for the Mahanirvana or others. I have to check on that. Then the Jal Gayatri will be coming. So that is how you will start even healing yourself and others. That's coming up. And the realization part of your own self will anyways be continued. Then I was thinking about teaching something which is very, very crucial, but people might misuse it. That's why I am stopping myself, because there is a series that I want to do on Bashikaran. But people will use it in the wrong way. So that is the only reason why I'm not still thinking on that. But apart from that, there are other things that we will be doing. There are one particular thing that I was planning was 27 chakras. So you should realize that part, like what exactly it is. So things are coming. So don't worry. My plate is so full that like. And that's why I don't carry the vessel. There is no vessel right now. So you keep on pouring and let me, come back to that thing. And now when you talked about chakras,
I somehow, I don't know, I heard somewhere. So I just, maybe it's a clarification. Does chakra move in our body? Does chakras move in our body? What are chakras? Chakras are the wheel, but does their location change? Like the heart chakra comes to the hands? It won't. Okay, that's it. Thank you. The energy of that can move, but it won't. It cannot move in that way. Coming from the, see, many people, I have seen many people doing yoga also. A variety of yoga. I saw like some people holding a child from its leg and rotating it. It's also yoga. They say it's a yoga. That's what craziness is all about. Like people not understanding it, and whatever they feel like, it should not be opinion based, na? It should be reality based, which has been checked. So heart chakra coming to hand is, I don't know. It should not. I can say this much. I'll wait for the teachings which you will give on chakras. I look forward to that. Okay. Sure. Even I also look forward to pass that on to all of you. So, Sasiji, Ji. what changed? What has changed? Outside, nothing. Inside, nothing is left. And if you remember from the beginning, when I started the process a year back, I just used to pray. Take what is not mine. So I think this is that shunyata, because it is not emptiness, because that's not a literal translation. That shunyata, where what I am is there and what is not mine is gone. And how is the space? Limitless, boundless. So you feel your power there, or you lose your power there? To be honest, there is no entity like power. Good. So how would you define yourself in that space? If you allow me, can I ask the question on that? How can you define light in the space? You can define light in the space. Because you are in the light. Space is the light. So when you are there, can you define light? Because there is no separation. Good. Can you define God? No. Why? And I don't want to. I don't want to, because then I will be limiting. It will come into physical identity. See, we are talking about space, and now when I just change the name, you changed your answer. Explain me that. When I asked, like, how is that space? Can you define that space? And you said you cannot define the space because you are the space. Right. Now, when I said, how about God? If I define that it is in my body, if I don't define with the true existence, it's boundless. It's all over. Then you are not God? Definitely. That's what I'm saying. If I define it, then it's a physical boundary, then it is my body. Okay. But in the true sense, it is boundless. It is limitless. So when you experience that limitlessness, what happens to you? I'm all over. What happens to you? एक तरह से स्थिरता आती है. To whom? That's $1 million question. To whom? Yeah. To whom? That means still there are two entities. Yeah. I have to see now. If I say honestly, what I feel is, it's like the energy which is coming. I can go into any
confinement and experience that. So if I come to the body of Shashi, I can say, okay, this is what Shashi feels. But if I go to say somebody else's body, I say, okay, this is what other person feels. So it's like transition or movement is very comfortable because it just takes a moment. I mean, if I want to just feel what Manasji feels, it's just like click and I go there. So I don't know how to put it in words because again, somewhere I understand shabd bahut kamzor hai, which cannot define my experience, but this is exactly I feel. So there is no place to go because I am where I want to. It's just a moment I put that intention or thought in that. And who is putting that thought? Again, I'll say, who is there? There's no, it's like when the need arises. And whose need arises? Again, you will ask a question. So did you experience your freedom in that space now? Absolutely. I think that for me, freedom is bliss. That is, Yeah. because Because this, whatever you suppress, you don't feel good about that. But whenever you are able to express anything that you feel like, that's where your real freedom shows up. yes. And that's where people are not able to understand, like why they feel that way, why I'm feeling like this, is because they're not able to express themselves. One way you find your expression. You never like confinement. Never. And for me, a person who doesn't give me freedom, I'm not comfortable. You know, it's like keeping a distance because this person is not accepting the way I am. And that person wants to change me, mold me according to their own choice. And that takes me away from my blissfulness. Yes. So are you incomplete or you are complete? If you allow me to give my honest answer, there is no Yes. question of complete or incomplete. That duality is not there. Can you see? So you are transcending duality in that space. Yes, That yes. is where you should be. Yeah. Because every time when we sit down, even we meditate and we will start thinking like, is it really happening? Then that means I and my mind are working at different directions. We don't understand each other and we are just talking. So we are not experiencing it to the fullest. Yeah. But And in the actually, space that, this is what I was just saying. I mean, if you allow me to just share that, when you ask this question, immediately a question popped into me that when I say something that is complete, it means I also believe that there is something incomplete. something incomplete. So then for me, that both doesn't exist because there is no looking for completeness because there is nothing like incomplete. Oh, That's wow. nothing. Amazing. That's really a good space. Be there. Thank you. Thank you for taking me there and placing me there. It's your journey. You have walked it through. So thank you for that. Okay. Thank you. Thank you for sharing that. Yes, and I look forward to more unknown so that that become unknown, that unknown becomes known to me, and again look for another unknowns. जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर कौन है देख रहा है, right? We will सही discuss बात. on that anyway. Yes. Because that's what, like, even I was looking forward to for a retreat. So we'll plan that. We'll let you know. Thank you. Thank you. At least for a 2-3 days, we'll check out. Okay. Yes. So, Thank thank you. you, Sashi ji. Pranam. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pranam. Pranam. So after this, I think we will stop the Q&A sessions up until you find some questions. And if you have found your question answers, means it is really good. I have done a good job. That means the only thing is I just needed to do 75 sessions, and after that everybody got enlightened, right, Sandhya? And there is no question after that. I did a great job actually. The teachers failed in front of the student. No more questions. That's amazing.
So, why do I feel like sitting in front of popcorns? One pops, then the other pops. Okay, Abhaji, are you there? Unmute कीजिए एक बार. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम आबाजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया गुरुजी, कृपा है आपकी, चल रहा है सब. एक बार गुरुजी मैं थोड़ा सा सोचने बैठी, मतलब थोड़ा सा चिंतन चल रहा था. तो जो हम पूजा करते हैं, देव है और ईश्वर, इनमें कितना भेद और क्या भेद है? देवता और ईश्वर. देवता और ईश्वर में क्या भेद है? ओके. हाँ जी. चलो, तो स्टोरी टाइम. श्योर गुरुजी. ओके, तो आभाजी बड़े ध्यान से सुनिएगा. जी. मैं एक दिन पहले सुधा जी से बात कर रहा था, तो उसका आंसर मैंने दे चुका हूं. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, सो आई हैव द आंसर. हालांकि एग्जैक्टली उनका क्वेश्चन यही नहीं था, लेकिन आंसर वैसा ही है. जी गुरुजी. तो रामायण में कहीं एक जगह पे उल्लेख है कि सती शिव को पूछती है कि आपने राम को नमस्कार क्यों किया. इज देयर ए मेंशन इन रामायण दैट सती इज आस्किंग शिवा, व्हाई आर यू फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ राम? जी गुरुजी. है. ओके, सो यहीं से शुरू करते हैं. सो लेट्स टेक दिस एंड दिस विल गिव यू योर आंसर. व्हाट्स द डिफरेंस? ओके. यस गुरुजी. सो सती पूछते हैं कि इनको नमस्कार क्यों किए? Why have you folded your hands in front of Ram? Then Shiva says, because he is the ultimate Brahman. वो स्वयं परमात्मा है. Then Sati asks, परमात्मा एक ही जगह पे कैसे हो सकता है? How can it be limited to one body at one place? क्योंकि परमात्मा हर जगह व्याप्त होना चाहिए. अत्र तत्र सर्वत्र. सर्वत्र मीन्स अत्र तत्र, यहां वहां, सर्वत्र, हर समय, एवरीवेयर. Then why did you folded your hands? And why do you say he is परमात्मा, या तो परब्रह्म क्यों है, आप ये क्यों कहते हो? उसके बाद शिव ने उन्हें कुछ समझाया, और मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं. तो इससे आपको ईश्वर मतलब परब्रह्म, देवता मतलब अभी जो राम का जो अवतार था, उस हिसाब से समझा देता हूं. सो वी विल बी कोरिलेटिंग इट एज दैट. शिव कहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ए क्रिएटर, जिसे ब्रह्म कह सकते हो आप. ठीक है, जो ब्रह्म है वो क्रिएटर है. एंड द क्रिएटर डजंट डू एनीथिंग. वो कुछ नहीं करता है. ही जस्ट क्रिएटेड एंड जस्ट वॉचेस इट. वो करने के बाद छोड़ के उसे बैठ के खाली देखता है, कुछ नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब उसने बना दिया, व्हेन ही क्रिएटेड एवरीथिंग, कैन देयर बी अ क्रिएशन विदाउट मूवमेंट, विदाउट एक्टिविटी? हो सकता है क्या क्रिएशन ऐसा जिसमें कोई हलचल ही ना हो, कुछ भी का ना हो वहां पे? ऐसा हो सकता है क्या क्रिएशन? वो फिर स्पेस हो जाएगा, वो क्रिएशन नहीं होगा. सो शिव वही कहते हैं कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ब्रह्म दैट जस्ट क्रिएट्स एंड वॉचेस इट. बट व्हाइल वॉचिंग, वो जब देखता है, देन इट रियलाइजेस दैट देयर इज नथिंग हैपनिंग. एंड इन ऑर्डर टू मेक इट हैपन, ही टेक्स ए फॉर्म. वहां कुछ कार्यरत हो, उसके लिए वो एक रूप धारण करता है. और मैंने सुधा जी को जो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल है, आपने कभी लोहे का पत्थर देखा है? द स्टोन इन विच आयरन ओर इज कम्स, आयरन ओर जिसमें से निकलता है. नहीं देखा. नहीं देखा. ओके.
similar to like you might have seen a stone in which there is gold. पत्थर है लेकिन उसके अंदर सोना है. तो यहाँ पे ईश्वर क्या है? ये पत्थर है. It comprises of everything. लेकिन वो सोना जब पत्थर के अंदर है, कुछ काम का है वो? तब तक तो कोई काम का नहीं. It might just look like a paperweight, good one, but of not major use. Then what it does, it takes a shape and a form. If it is an iron ore, अगर लोहे का है, so it can take various of shapes. वो कांटा बन सकता है, हैमर बन सकता है, चाकू बन सकता है. So it takes a different forms for different types of work. अनेकानेक कार्य करने के लिए वो अपना स्वरूप बदलता है. लेकिन यहां पे एक चीज क्या है? The iron was already there before it was anything. A hammer, a knife, a nail, whatever. कुछ भी बनने से पहले वो आयरन तो था. लोहा ही. When it takes a shape, it is still an iron. And when there is no shape, the iron still continues. तो इसका मतलब क्या हो गया? स्थिरता क्या हो गई इसमें? The iron never changes. मतलब ब्रह्म जो है वो कभी बदलता नहीं है. लेकिन वो अपना कार्यरत करने के लिए, इन ऑर्डर टू डू सर्टन एक्टिविटी, इट टेक्स ए फॉर्म. वो हो गया देवता. इसीलिए आपने देखा होगा ब्रह्म को किसी कैटेगरी में नहीं डाला जाता. वी डोंट पुट Brahman into a certain category कि he is a power god, he is a wealth god, he is a education god. Do we do that? हम वो नहीं करते. क्यों? Because ब्रह्म को उस कैटेगरीज में डाला नहीं जा सकता. बट बिकॉज देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ थिंग्स टू बी डन इन द क्रिएशन, संसार रचा गया है, तो इतने सारे चीजों को अगर कार्यरत करना है तो कार्यवशत वो जब रूप धारण करता है वो देवता बन जाता है. अच्छा. ईश्वर क्या हो गया? Which never changes. It creates everything, but it never changes. It just takes a form in order to do a certain activity. एक्टिविटी बेस्ड जो है वो हो गया देवता. नॉन एक्टिविटी बेस्ड वो है ईश्वर. तो गुरुजी, इसका ही एक रूप जो देव में शामिल है, क्या हम इसी को प्राप्त करते हुए ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं? यदि हमें ब्रह्म में एकाकार होना है, हाँ. यदि वो सिचुएशन हमें चाहिए कि हमें उसी में ही लीन होना है, उसी में एकाकार होना है, तो वो रास्ता क्या है? वो स्टेयर्स क्या कौन सी हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बहुत सुंदर सवाल. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसका भी उत्तर मैंने दे चुका है. आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, सो इट इज अवेलेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गो टू टेम्पल. Yes. मंदिर जाते हो. हाँ जी. मंदिर में आप देखना एक विग्रह रहता है. देयर इज अ आइडल ऑफ एनी गॉड. वो वहां पे क्यों है? ये तो एक मीडियम, ये हमारा मन झुके उधर, लगे कि उसी चीज को हम बार बार. Right? So one thing is, as you rightly said, it will create a focus in our mind. Right? दूसरा, आप वहां जाने से आपका ध्यान लग जाता है. And the second thing, when you do all those things, you also feel good within yourself. आपके अंदर वो चेतना जागृत होती है, आपके अंदर वो खुशी का एहसास होता है आपके अंदर. राइट? अब बताता हूं कि ये विग्रह क्यों है वहां पे, और फिर बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेप्स. स्टेप्स वही है. ओके. कैन यू सी इलेक्ट्रिसिटी? बिजली दिख सकता है आपको? ऐसे तो क्या लाइट ही दिखती है बस, वैसे बिजली क्या? इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैनॉट सी इलेक्ट्रिसिटी. नहीं. बट इलेक्ट्रिसिटी हैज पावर और नॉट? यस, पावर है. Has a power. What all it can do? One thing or many things? One thing. Multiple things. Based on the devices. जिस तरीका उपकरण उस तरीके का कार्य है. तो यहाँ पे ईश्वर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है. उपकरण क्या है? देवता है. यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम पावर इन डिफरेंट वेज. शक्ति एक ही है, अलग अलग तरीके से उसको कार्यरत करने के लिए वो देवता का रूप धारण करता है. नाउ एग्जैक्टली व्हाट अपराव जी सेइंग, साकार निराकार ब्रह्म. ठीक है. अब आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी
को देखना है, इलेक्ट्रिसिटी को महसूस करना, यू वांट टू सी इलेक्ट्रिसिटी, यू वांट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो उसको तो टच करके करंट का झटका ही लेना पड़ेगा, तो पता चलेगा, महसूस होगा बस। Can you see? So one देख way नहीं is going and touching the wire, but still you don't touch electricity, you touch the wire. वायर वायर टच करना पड़ेगा। But while touching the wire, you are also touching the इलेक्ट्रिसिटी, electricity running in it. यस, Wire कभी झटका नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी है वही झटका दे electricity रही है। झटका देता है. So now, in order to experience the Brahman, what do? You directly go and touch it, but you don't touch it directly. You touch a device through which it is flowing. अच्छा, Yes. जब आप देवता का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसमें क्या किया जाता है? उसमें तो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा है, हमसे इसको अपनी वो डालें उसमें। Can I say that a power was put into it and it is passing through that now? The idol has become the wire, and the pran pratishtha that was done is the power flowing in it. यही सिस्टम होगा गुरु जी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, उसको पूरा क्लैरिफाई करेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है? So there you go and watch a idol, but when you watch the idol, what is your thought here? क्या समझ में आता है आप? Okay, so भगवान ऐसे दिखते हैं, शायद, might be वो ऐसे दिखते होंगे. But when you go and sit there, if you sit and close your eyes, you are not seeing the image, but you feel good within yourself. Yes or no? Yes. ऐसा कई जगह पे हुआ होगा आभा जी. You might have gone to places where despite going into a temple, you don't feel good about that. वहां जाने के बाद भी आपके विचार चलते रहते हैं. कई बार होता है, कई बार होता है. But there would be a certain temple where you enter and you are just happy. वहां कोई विचार नहीं आते, कोई चिंता ही नहीं आती. कुछ मंदिरों में तो ऐसा होता है कि एंट्री करने के बाद एकदम कूलनेस, एकदम पीस जिसको कहते हैं, मतलब ऐसा फील होता है. Yeah, that's what I was talking about. Okay, so देखो, but in order to experience the electricity bulb, the electricity, I can directly touch the wire and get a shock. Many people do that through different kind of processes that are there. Have you seen many people say, oh, I started doing chakra meditation and suddenly I'm having severe headache, I'm not able to control myself, I'm falling down, this, that. Have you heard that? सुना है आपने? हाँ, सुना है. हाँ, इन्होंने क्या किया है जानते हो? अनकंट्रोल्ड वायर को टच कर दिया है. They have touched something that they are not able to handle. And what happens to them? Exactly what happens to you when you directly touch the current. But there are processes. But I want to experience that, na? I want to experience the divinity. मुझे वो ईश्वर को महसूस करना है, मुझे वो ईश्वर को देखना है. So just like you cannot see the electricity, but then you create a device. आपने एक यंत्र बनाया. यंत्र क्या है? फैन है, लाइट है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर आपके घर में, right? So all these things that you see, what is happening in this? इसमें क्या हो रहा है? Electricity is coming, but you are only seeing it as a device and through the product that is creating. माइक्रो ओवन में आपने खाना डाला, स्विच ऑन किया और ये गर्म कर देता है. गर्म हो गया. बट इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना. सो कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एज हीट और कोल्ड और एनीथिंग? उसे कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज एंड एवरीथिंग इज विद इन इट. ओनली द डिवाइस दैट वी आर यूजिंग इट चेंजेस. अब क्या हुआ? मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखना है, मैंने क्या किया? घर में अंधेरा था, इट वॉज डार्क इन द होम, आई केम, आई स्विच्ड ऑन द लाइट, and then what do I see? मुझे क्या दिखाई दिया? The light appeared. What is the light exactly? Electricity का system है. Light is a form of electricity as a coming through a device for the utilization purpose. तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को देख रहा हूं
सॉरी, अगर मैं लाइट को देख रहा हूं, इफ ए बल्ब इज लाइटेड अप एंड आई एम लुकिंग एट द लाइट, am I not seeing the same electricity? Might be in another form. ये फॉर्म में ही नजर आ रही इलेक्ट्रिसिटी लाइट के। Then if you go back, अच्छा, let's say you have seen light for the first time, आपके घर में पहली बार बल्ब लगा है, and you switched on and you saw the light, what will you feel? अचंभित हो जाओगे? यस। What is this? What is this? You'll be questioning. And what do you do then? You then see from where this light is coming. Then you go and see the bulb. कहाँ से आ रहा है? So you watch the bulb. Then you say, no, the bulb is not entirely glowing. Within them, there is something called as a filament. Achha, but if there is a filament, but there is another thing without which it is not running. There is something called as a switch. So when you go to the switch, why this is happening? When I'm switching it on, it is getting lighted up. When I'm switching it off, the light is going off. Then you go beyond the switch also. Then what do you see? Wiring. Then again, wiring is not having all the power, because when there is a power cut, the wiring is not working. Then what do? Then you enter into the science of energy. कहाँ से आया, कैसे आया? So did you see all that you are doing are actually the devices to take you to the Nirakara Brahma. साकार ब्रह्म को जब आप ढूंढते हुए अंदर जाते हो, one by step when you move inside, it is actually taking you to the same space. But what all it needs? Some people say we are happy that the light is on. हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए. मतलब जो है मेन पावर वो निराकार ही है गुरुजी. Absolutely. ये तो एक मीडियम है साकार, वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या? Yes. जो साकार रूप से हम जिसको पकड़ के चलते हैं, हमने शिव तत्व को ले लिया, राम को ले लिया, जिसको भी ले लिया, तो मतलब हमको निराकार तक पहुंचने के लिए यही एक मीडियम है क्या? यही सब सीढ़ियां दी गई है आपको. These are the steps through which, or else just think of, किसी ने आपको कोई स्टैचू नहीं दिखाया, किसी ने आपको भगवान के बारे में बात ही नहीं करा. Where will you go? Right? So these are the specific steps through which you slowly walk into. और मजेदार बात आभा जी, हाँ, आप जब कोई भी आकार को देखते हो, वो आकार किस में दिखाई दे रहा है? किसी रूप में ही दिखाई देगा. हाँ. किसी आकार में दिखाई देगा. आकार हमेशा निराकार में ही दिखाई देता है. अच्छा. Yes or no? Yes. Whatever, when you are seeing an outline, you are seeing it in space. आकार देख रहे हो, लेकिन आकार किस में प्रकट हो रहा है? निराकार में. So ये है the change of perspective of looking at it. ये जो आकार है, यही तो निराकार में है. So when you move from this boundary to the boundaryless, you reach home. अच्छा गुरुजी, एक बात और. हाँ जी. कि जब हम चलना शुरू हुए, हमने किसी देवता को प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया, हम उसके एरिया तक पहुंच गए. एरिया का मतलब उनके धाम, जो भी कहेंगे हम, जो भी एक्सप्लेन करें, वहां तक हमने उतनी साधना की उस देवता को प्रसन्न करने के लिए. हमने वहां तक पहुंच गए, पहुंच गए वहां तक. अब उस वक्त में हमारा प्रयाण का वक्त समय आ गया, मतलब हम यहाँ से वहां चले गए बस. तो क्या हमारी स्थिरता उसी देवता के क्षेत्र तक रहेगी कि उस स्थिति में भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम वापस आएंगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन आभाजी. It is actually a very high level question of what you are asking now. देखो, एक होता है लोक, मतलब उनका स्थल. जस्ट लाइक मैंने आपको प्रसन्न कर दिया और मैं आपके घर में जाके रहने लगा. ठीक है. योर स्पेस, वो आपका घर है. But while being in that space also, you have to realize that it is not about a space where I stay. I am the space. मैं किसी स्थल पे चला जाता हूं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कौन हूं? Until that realization happens, Abhaji, it's just like going on a vacation.
यू गो टू ए वकेशन, जितना दिन तक पैसा है यू एंजॉय द वकेशन, पैसे हाँ, खत्म हाँ, फिर वापस. वापस आ गए. So that's why we should never go on a vacation, especially while going from here. We should go for once and all. अच्छा गुरुजी, फिर उस देवता में वो क्षमता नहीं है कि वो हमारी प्रसन्नता के तौर पे वो यदि मैंने उसको प्रसन्न किया है कि वो Okay. अपने लोक से मुझे परम ब्रह्म तक भेज दे. ओके, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात. उसकी क्षमता है. इट्स नॉट दैट उसके पावर नहीं है, इसके पास क्षमता नहीं है. ये देवता की क्षमता की बात नहीं है, ये आपके क्षमता की बात है. हाँ. नहीं, मैंने तो उसको प्रसन्न कर लिया. ओके, अब वो मुझसे प्रसन्न है. देन उतने इन दिन. दैट स्पेस एक ही चीज होता है आभा जी, जब हम्म, कोई वरदान मांग लेता है. हम्म, Okay, so what happens? I have done this, so give me this, and it is done. खत्म. हाँ, खत्म. क्योंकि खत्म मैंने होता. जो मजूरी की उसके लिए उसका मैंने पैसे ले वो लिए मिल गया मुझे. हाँ, बस. Then what is the fault of the God there? No fault of him. वही But बहुत. if you are not asking कि मैंने ये किया, मुझे ये शक्ति दे दे, या मुझे ऐसा रूप दे दे, या हाँ, ऐसा नहीं कुछ, चाहिए. हाँ, कुछ नहीं चाहिए. then what happens? हम्म, Then it realizes that you are free from your attachments and desires. हाँ, आप यहाँ से सब सारे छोड़ चीजों दिया. से मुक्त हो चुके हो. मुक्त होने का मतलब क्या है? आपको वापस आने की जरूरत नहीं है. नहीं अब है. वो क्या करेंगे? Then they will show you the pathway to the ultimate. See, what is the work of the God there? उसका काम यही है कि आपने जो तपस्या की, आपने जो मांगा वो आपको दे दिया जाए. और आपने अगर मांग लिया तो आपने जो किया था उसके लिए आपने भरपाई ले ली. हाँ, उसका तो हो चुका, भुगतान हो गया. तो क्या करोगे अगर देवता सामने आ गए तो? तो हमें कुछ मांगना ही नहीं है, बस ठीक है, क्या चलो. करोगे? What will you do if your God is standing in front of you? Whatever God you believe in. हाँ, नहीं, हमें All of कुछ चाहिए नहीं है. जो किया है वो सब ले लो आप. हमने जो भी किया है तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसके एवज में. देखो उसके लिए ना बहुत सिंपल आंसर दे देता हूँ. देखो हाँ many जी गुरु जी. people get complicated answers for that also. What if your God appears in front of you? What will you do? Oh, हाँ, I don't know what I will do. Some people say मैं ये मांगूंगा. Some people say I will put myself. See, everybody does a पूजा, right? कभी तो घर में पूजा किए होंगे. प्रीति जी पूजा करते हो ना? हाँ करते हो. पुष्प चढ़ाते हो, फ्लावर, यू पुट फ्लावर एट द फीट ऑफ द गॉड्स, डेटीज. जब पुष्प चढ़ाते हो, वो पुष्प कुछ पूछता है भगवान से? डज इट आस्क एनीथिंग टू द गॉड व्हेन यू पुट ए फ्लावर? द फ्लावर सेज, oh, I am a great saintly flower. Now I have come to your doors. Now I am going to be at your feet. What are you going to give me? पूछा कभी आभा जी? नहीं पूछा ना. क्यों नहीं पूछता? उसका सिर्फ एक ही काम है, समर्पण. Completely surrenderness. It surrendered completely. It didn't ask anything. It just went into the feet of the divine. तो इसके बाद जब भी अगर आपको कोई देवता दिखे, पूछने का नहीं है, बताने का नहीं है कुछ भी. पुष्प बन के अर्पित हो जाओ. Just become a flower and just go to them. They will take care of you then. गुरुजी, ये अभ्यास की चीजें हैं. और यदि इस सब चीजों को प्राप्त करने के बाद हम उसी सिचुएशन पे पहुंच गए, वो तो लास्ट मोमेंट को ही तो देखा जाता है. अभी तो हम पूरा पूरा समर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आती है, उस वक्त पे हम जरा सा चूके हैं तो हमें वो करके वापस ही आना पड़ेगा ना. अगेन वेरी गुड थिंग. ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आभा जी. फिर देखो, आपने ऐसे लोगों से मिले होंगे, लाइक देयर माइट बी पीपल अराउंड यू जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं. ऑलवेज आता ही है, कहीं ना कहीं कोई टकराता ही है ऐसे. उनको कुछ भी दे दो, वो उसमें से नेगेटिव निकाल देंगे. सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. राइट. व्हाट आर देयर थॉट प्रोसेस? उन लोगों के विचार कैसे हैं? असंतुष्टि वाले विचार है, नेगेटिव ही है, सब कुछ असंतुष्टि है. और क्या? अगर उसके सामने देवता भी आ गया तो वो खुश हो पाएगा? कभी नहीं. नहीं हो पाएगा. क्यों? उसका मन की स्थिति. द थिंग दैट इज हैपनिंग विद इन हिम
is not allowing you to be content. You will never be content. Even if that God appears, you will not be content. Right? तो क्यों? क्योंकि उसके विचार वैसे हैं. आपने जो पूछा, what you are asking is, what if I miss out at the end point? इसीलिए तैयारी है. Have you seen the Olympic players, Abhaji? Few seconds, they run for few seconds. Few seconds. तैयारी कितने साल की? काफी सालों की. How many years they practice? Why? बहुत सालों से लगे रहते. Because they know that if I practice here, वो कहेंगे नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, all these years I will not practice, I will straightly keep the energy with me and in that 4 seconds I will run. कभी दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा. चूक जाएगा. And just think of one person who says like, I am just practicing slowly here, but there I will run fast. भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा. Because his practice itself is not enough. But if he has practiced enough, वहां पे भी भाग जाएगा. He will run like that. Similarly, what happens to people is those who are not giving their 100% here, they will, at the end, what will happen to them? चूक जाएंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं गुरुजी, वो मैं समय बहुत ले रही हूँ आपका, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा और पूछ लूँ आपसे क्या? हाँ बिल्कुल पूछ लो. गुरुजी एक बात और बताइए कि ठीक है जो अभ्यास चल रहा है उसके लिए केवल इसी के लिए चल रहा है कि हम मुक्त रहें, हर चीज से कोई बंधन ना रहे, और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे शरीर भी बड़ा कष्टदायी स्थिति में आ जाए कि कहते हैं ना जन्मत मरत असह दुख होई. तो अगर उस स्थिति में और ये सिचुएशन जब सामने आती है तो मन कैसे कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं चलता, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? ओके, उस स्थिति का कंट्रोल करने का तरीका है डिटैचमेंट विद द बॉडी एज वेल. शरीर से भी परे, मन से भी परे. कैसे? शरीर में तो दर्द हो रहा है, नहीं शरीर में तो दर्द हो रहा है, लेकिन हाउ विल आई कम आउट ऑफ दैट? यही प्रॉब्लम है ना कि मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, अब इसे कैसे भुलाऊं मैं? बाहर कैसे आए? हाँ अच्छा. Then again it comes to the point of realization. Again Abhaji, let's go to our basics. Let's say you have pain in your knees. घुटनों में दर्द है, बहुत जोर का दर्द है, एंड वो दर्द को सहते सहते आपको नींद आ गई. You had pain, but suddenly you fell asleep. हुआ है कभी ऐसा? कोई भी शरीर में कहीं दर्द था और आप फिर भी नींद में चले गए? Happened? पॉसिबिलिटी कम है गुरुजी, वैसे हो सकता है कभी हुआ हो, याद नहीं पड़ता. ओके, लेकिन नींद आ जाती है कि नहीं? अगर नींद आ गई, पॉसिबिलिटी का बात नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर नींद आ गई तो सब दूर हो जाता है. दर्द को क्या हुआ? किनारे हो गया दर्द. कैसे? अगर आप में दर्द था तो आप चल रहे हो, बैठ रहे हो या सो रहे हो, दर्द तो होना चाहिए आपको. होना चाहिए. लेकिन आप सो जाते हो और दर्द नहीं रहता, लेकिन जब आप उठते हो फिर दर्द आता है. तो किसके उठने से दर्द आया? ये तो शायद माइंड का कनेक्शन है कुछ गुरुजी इसके. अब अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हेन you have a pain, pain is in the body but in your presence. शरीर में दर्द है लेकिन आपके होने से दर्द है, आपके नहीं होने से. यस, दर्द शरीर का ही है, यस, आपका नहीं है. जिस दिन अपने आप को उस तरीके से अलग करके देखना शुरू कर दिए ना, छूट जाओगे उधर से. उधर से निकल जाओगे. बस गुरुजी एक आखिरी क्वेश्चन और. नहीं आप 4 पूछो, कोई बात नहीं. कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम जो करते हैं वो चलिए ठीक है, जो भी प्रोसीजर हो, जो भी प्रोसेस है सब करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन उस ब्रह्म को पाने के लिए वो सबसे सरल रास्ता क्या है?
सबसे इजी पहुंचने के लिए, सबसे सरल, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म में एकाकार होने के बाद आपको आना ही नहीं है। ओके, सबसे सरल उपाय बता दूं? जी जी। अहम ब्रह्मास्मि। ये तो है। ये तो बहुत अच्छा है, बट इतने अभ्यास में नहीं आ पा रहा है। हाँ, अब चेक करो कि कौन अभ्यास में नहीं आ रहा है। ये हम ही नहीं आ रहा है ब्रह्मास्मि, मैं इसको कैसे स्वीकार कर पा रही हूँ कि मैं ब्रह्म, क्योंकि मैं देखो, ही ब्रह्म हूँ। हाँ आबाजी, क्योंकि इतने सालों तक हम अपने माइंड से काम किए हैं, इतने सालों तक हम शरीर में रहे हैं, तो ये शरीर और मन जो है वो हमें समझने नहीं देता कि है क्या ये, ऐसा क्यों है। सो बंधन बांध के रखा है ना। बट इनको आबाजी, जब ये बंधन बांधता है तो आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप से एक सवाल पूछो। जी सवाल, अगेन बेसिक क्वेश्चन, इज दिस माय फर्स्ट बर्थ? क्या ये मेरा पहला जन्म है? नहीं है। नहीं है। ओके, तो फिर कई इससे बार पहले देखा। मैं कहां था? कहीं तो हूं, कहां था पता नहीं है, लेकिन कहीं तो था। कैन यू डिनाई दैट यू आर नॉट देयर बिफोर दिस? यू कैनॉट टेल कहां पे थे, आप बता नहीं सकते शायद कहां पे थे, लेकिन आप थे कि नहीं थे? गुरुजी थे तो, लेकिन कहां थे और ये नहीं पता ना। ये नहीं पता हाँ, कोई कहाँ बात थे। नहीं, बट कैन यू डिनाई दैट यू आर नॉट देयर? नहीं कर सकते, बिकॉज मन नहीं मानता, आप नहीं मानते कि मैं तो था। कहां था याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो था। अच्छा, शरीर के बाद आप रहोगे नहीं रहोगे? ये तो कोई गारंटी नहीं है अभी, ये तो नहीं पता फिर कि अगेन हम मैं वही सेम सवाल पूछूंगा, ये आपका पहला जन्म है? कुछ नहीं तो इसका पता मतलब गुरु। इससे पहले भी आपने कोई शरीर बदला होगा, बदला होगा। उसके बाद भी आप हो। अभी तो है ही। वो शरीर नहीं रहा, आप हो कि नहीं हो? हाँ, मैं तो हूँ ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो मैं हूँ वही हूँ, जो अहम है वही ब्रह्म है। तो तो आप ये कौन ब्रह्म हो? तो चल रहा है। तो जो आ रहा है जा रहा है वो क्या है? ये तो चल रहा है, यही तो ब्रह्म चल रहा है। लेकिन आप क्या हो? स्थिरता क्यों नहीं हो रही उसमें? आप क्या हो? फिर तो मैं ही ब्रह्म हूँ, जो चल रहा हमने है वो मैं ही हमने हूँ। कभी मना नहीं किया, आप मान नहीं रहे हो। ये गुरुजी बताएं, ये अभी थोड़ा सा क्लियर तो है, बट 100% स्वीकारोक्ति नहीं आ रही है दिमाग। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक बार वेद व्यास जा रहे थे रास्ते पे। ओके, वेद व्यास वाज गोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड हम्म उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा कीड़ा है रेंगते हुए जा रहा है रास्ते से। हम्म इट इज क्रॉलिंग ऑन द स्ट्रीट हम्म एंड इट इज इन ए वेरी हरी, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। एंड वेद व्यास बीइंग a divine being, he was able to understand what his thoughts are, so he started talking to him, उससे बात करना शुरू करता है। तो हाँ। पूछे, तो कहाँ भाग रहा है? क्या कहा उसने? वेयर आर यू गोइंग? सो कीड़े ने क्या कहा? द स्मॉल लिटिल क्रॉलिंग, that little being, he says, can't you see something is coming, a huge thing is coming towards me, it might crush me and I may die. लोभ शरीर का, वो तो कीड़े में भी है। सब में है ये तो। लेकिन आप वो सारे योनियों को पार करके मनुष्य योनि में हो। हाँ, इंसान के रूप। अगर अभी भी वो कीड़े का जो अटैचमेंट था आप में अभी भी वही है, क्या शरीर के बदला प्रति आपने? कोई फायदा नहीं इंसान होने का। So the same attachment that the worm has or that small little insect has, he as a human, you have evolved from that. You have changed many bodies till now. And now finally you are sitting in the body of a human, and if you are still having the same kind of attachment desires like a creeping crawling cockroach, what's the difference between you and that? मनुष्य योनि में क्यों आए?
ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? नहीं गुरु जी, शायद आपके सानिध्य में आए हैं तब से लग तो रहा है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर की सेवा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि चाहत को बंद कर दो। आप चाहत बंद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप योर डिजायर्स। नहीं, Those who say लेकिन stop your desires, you cannot stop your desires, but you can change your desire. What is the change in desire? The change in desire is I want the ultimate, and the ultimate is the Brahman itself. मुझे चाहिए, मैं नहीं कहूंगा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वही चाहिए, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और और कुछ नहीं। अगर आप इच्छा करके घर बना सकते हो, by your thought process, by your asking, if you by your praying, you can get a house, a car, and all these things in this world. Why can't you get the Brahman itself? चाह बढ़ा कर तो देखो, राह अपने आप मिलेगी। क्योंकि आभा जी, कल मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है कि जब तक शिव ना चाहे आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। ये तो फैक्ट जब है। तक शिव ना चाहे आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। और जिस दिन आपने उसकी चाह को अपना लिया, शिव ही मार्ग बन जाता है। ये सही है गुरु जी, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने शुरू से आपसे यही कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता है। बट यही मुझे एक सबसे, चीज बहुत अच्छे से आ रही है हाँ जी, कि मुझे शांत होके और प्रसन्न होके बैठना बहुत भाता है, बस बहुत भाता है। जिसको हाथ उठाना आ गया ना, मुझे और उसका कुछ नहीं हाथ आता, इतना उसका हाथ काफी है। वो ही थाम लेता है। बस कुड बी इतना ठीक बेटर। है। और गुरु जी बस आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे हमारे ऊपर। हम हमेशा इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब आपकी एक नजर पड़े इधर, तो शायद हमारा भी कल्याण हो। धन्यवाद, धन्यवाद आभा जी, बहुत ही थैंक यू अच्छे गुरु जी। अच्छे सवाल। शायद रिवीजन हो गया होगा बहुत सारे लोगों के लिए। प्रणाम गुरु जी। मुझे तो बहुत कुछ मिला है आज, खैर जो भी मिला है वो मैं काफी दिनों से चाह रही थी और मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज मुझे लगा मेरे पास वक्त बहुत है और शायद आपके पास भी वक्त है, तो मैंने उसका भरपूर फायदा उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम गुरु जी, बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम आभा जी। थैंक यू हरि भाई। हरि भाई स्टिल ईटिंग हिज फूड। वो भी जरूरी काम है। थैंक यू आभा जी, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम गुरु। So we are done with this also. Right. So finally, we are done for the day because no hands are raised. So that is good. Let me see just a second. Okay, fine then. उषा जी, go ahead. उषा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। ये ये मेरा सवाल नहीं, एक एक डिवाइन सोल का सवाल है। ओके, मैं आपसे पूछना चाह रही तो आप क्या ये कहते हो, आप डिवाइन अटैचमेंट। सोल नहीं हो? हाँ, क्या बोलूं गुरु जी? अच्छा, मैं चलो। मैं भी डिवाइन सोल है, अपना डिवाइन सोल है, वो नाम नहीं बोलते मैं। ओके, चलो। कुछ लोग आपके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाते हैं, कोई बात। कुछ नहीं, मेरे को है सो मैं थोड़ा बोले, मगर आप गुरु है, आपके मुख से बोले तो अच्छा रहता। आप और भी बोल सकते। ये अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट बोले तो ये नहीं मालूम होते थोड़े लोगों को, तो आप अच्छा विवरण कीजिए, अटैचमेंट वेरी तो क्या है? ओके, अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, बहुत सरलता से समझा देता हूँ, इन हाँ, ए वेरी इजी वे। ओके, बताएं। हाँ, everyone understand this, very simple. Let's say उषा जी, हाँ, आपने 1 लाख रुपए निकाले, so you took 1 lakh of rupees and you gave it to Ashwin ji.
you know why you gave, and then you ask what he did. है कि नहीं? पैसे निकाला आपने, आपने किसी को दिया और आप ये देख रहे हो कि उसने उसका सही इस्तेमाल किया नहीं किया। यहां पे आपका पैसे के साथ अटैचमेंट है नहीं है, क्योंकि आप हर बार पूछते हो कि ये पैसे का हुआ क्या, व्हाट हैपेंड टू दिस मनी, व्हाट हैपेंड टू दिस मनी। सो इफ यू आर आस्किंग इट अगेन एंड अगेन, दैट मींस यू आर ऑलरेडी अटैच्ड टू द मनी और नॉट दैट पर्टिकुलर मनी, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि हुआ क्या इस पैसे का। सो यू आर अटैच्ड देयर। अच्छा, कभी रास्ते में कोई भिखारी मिला है और उसको आपने 20 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, 1 रुपए दे दिए? डू यू गो एंड आस्क हिम व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी? नो। पलट के देखते हो कि वो क्या किया उस पैसे का? नहीं जो आप दे देते हो और उसके बारे में सोचते नहीं हो, वो डिटैचमेंट है। जो देने के बाद आप सोचते रहते हो, वही अटैचमेंट है। You give and forget, that's detachment. You give and remember, that's attachment. अब देखो, क्या देने के बाद आपको फिर भी याद है, वो अटैचमेंट है आपका। देने के बाद अगर याद रहा, समझ लेना अटैचमेंट है। अटैचमेंट भूल जाना नॉन अटैचमेंट। डिटैचमेंट हो और नॉन अटैचमेंट है, कुछ भी बोल दो उसको। संसार में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी भी याद है? संसार में बहुत कुछ है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट, ममकार बंधन, अपना ब्लड रिलेशंस, और बाहर लोगों से कैसा रहते अपन, अटैचमेंट है, नॉन अटैचमेंट, बहुत सारे अपन को जीवन में ही मतलब मालूम होता, एक्सपीरियंस होता अपन को, मगर अपन समझ नहीं सकते वो अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है। वो माया बंधन में रहते। सो डिटैच करना पता नहीं चलता। Start detaching yourself then. You now know the way. ये तो पूरा नॉन अटैचमेंट हो गए। वो एक सोल पूछे इसलिए उसके लिए पता नहीं है ना। तो इतना स्पिरिचुअल में रह के भी इतना अच्छा गुरु मिलके हम और नीचे लेवल में रहे तो क्या फायदा गुरु जी? वो ज्ञान चाहिए। जानते हो उषा जी, that's what I want to say. When you are here, and if you could realize what you are, then I think you have lived. Or else what will happen again? It is just a story time. आप फिर आओगे, फिर कहानियां सुनोगे, फिर जाओगे. And this is not the first time you people are sitting. And this is not the first time I am talking. एक बात है गुरुजी, सब पता चले जैसा रहते। हमारे को ज्ञान है बहुत, सब मालूम होते, मेरे को सब कुछ मालूम है, हाँ ऐसा रहते, मगर फिर भी अपन वो लाइन में जाने को थोड़ा लाइन क्रॉस हो जाते। That's what no. हो जाते। उषा जी, that's why I say your pain is bigger than your God. आपका दर्द आपके भगवान से बड़ा है। आप अपने दर्द को मानते हो, अपने डर को मानते हो, भगवान को नहीं मानते। वो हो जाता कभी कभी ऐसा, इसलिए मैं कभी कभी क्यों होता है वो? Why even it should happen for a moment? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हो आप बोलो? Is there anything in your hands? आप करते कभी कभी मेरा मैं देख लेती, मेरे को क्या हुआ आज, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मेरे को मैं क्वेश्चन डाले थी। मैं कौन देख लेता? Who will see? मेरा अंदर मेरा जो मन है, मेरे मैं क्वेश्चन कर लेती, ऐसा क्यों हो रहा। So who will see? फिर गॉड, भगवान करके पूछते कौन है गॉड, मेरा गुरु है, गुरु को पूछते ऐसा। Then you should not even question the thing that came in front of you. अगर रास्ता दिखाना उसका काम है, रास्ते का कंकर भी उसी का काम है। How do you question even that thing? Then you say he will take care. Usha ji, problem आया ना, even I see that he is coming in this way today. What am I doing here? I am not doing anything. I am just the observer. मैंने क्या कहा? ब्रह्म का meaning. What is the meaning of Brahman? It is not doing anything.
इट्स जस्ट वॉचिंग। आप क्या कर रहे हो? इवन वट एवर कम्स आई विल नॉट क्वेश्चन दैट। नहीं, हम उसको पकड़ के 3 घंटा बात करते हैं। आई टेक ए सिचुएशन एंड आई थिंक अबाउट इट फॉर 3 hours एंड देन आई डिसाइड नो नो द गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, बट आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड 3 hours। नॉट इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग, आया उसी का। द मोमेंट इट कम्स a situation, oh, you are playing this today, huh? Go play. कहाँ है? हम 2 घंटा उसके ऊपर सोचते हैं। याद है ना, आपने पत्थर उठा लिया हाथ से, you took that, I am going to do it. भरोसा नहीं हो पाता। जिस दिन एक बार भरोसा आ गया ना, neither you do anything, neither anything happens to you. उसी के ऊपर छोड़ देते। फिर भी फिर पकड़ क्यों रहे हो? पहले सिचुएशन आया, सिचुएशन को पहले पकड़ लेते हो। Something happened, let me hold it, like what happened? You analyze. Why are you analyzing? If the solution is in his hands, the problem must have also come from his hands only. And he knows better why this problem is in front of me now. So I'm not going to question. कोई फ्लावर जब चढ़ाते वो बोलता है कि अरे मेरे को पैर पे नहीं सर के ऊपर चढ़ाओ, बोलता है फ्लावर। लेकिन हम बोलेंगे, we will tell that because we still have an identity, we still have a questioning capacity. हम सवाल पूछ देते हैं। संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाया। Complete surrenderness has not happened. If it has happened, whatever is happening, हाँ, एक ही काम कर सकते हो। बाहर गर्मी है ना बहुत, एसी बाहर नहीं लगाते, अंदर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? अंदर लगाते हैं। Have you seen anyone that it is very hot outside, so I will put the AC outside? घर के अंदर एसी लगाया जाता है। You put the AC within your... Why? What does that mean? That means the situation outside cannot be changed. But I can अंदर अपन चेंज होना। एसी कहाँ मेरा लगाना? अंदर मैं चेंज होना। अंदर लगाना है। और जो कुछ भी हो रहा है उसी का काम है। ठीक कौन करेगा? वही करे। मैं वही ट्राई कर रही हूँ। नो क्वेश्चन ही नहीं आना उस चीजों के ऊपर। If I question, then I don't believe. मेडिसिन खाते हो? You eat medications? अच्छा, कभी देखा है उसके ऊपर क्या लिखा है? Compositions, और composition सही है कि नहीं? What? No, they have written it is at 0.05% is the composition with this and that. अरे, whether it is correct or not, let me go and check. First, let me go to the lab and check it whether it is correct or not, and then I will again create it and then I will eat it. Do you do that? No. नहीं। एक प्लास्टिक कवर में आता है, उसको खोलते हो, मुंह में डाल देते हो without questioning anything. Now tell me, why do you question God? आपको दवाई के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, दर्द के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए आप सवाल पूछते होंगे, ऐसा क्यों हुआ? मैंने ये अवतार क्यों लिया? No, you have not completely surrendered yourself. Complete surrender means what? एक बच्चा जब अपने माँ के कोख में रहता है, वो कंप्लीट सरेंडरनेस होता है। वो ये क्वेश्चन नहीं करता, माँ मैं इतना छोटा सा क्यों हूं? Why I am so small? Why have you kept me inside that water? Why? Where are my eyes and hands and fingers and nose and tongue and all those things? वो पूछता है क्या? वो सरेंडर्ड है और सब कुछ हो जाता है उसके लिए। आप मैं सरेंडर ही हो गए गुरुजी। नहीं, फिर भी कभी कभी ऐसा आते हैं। हाँ, अगर कभी कभी आया मतलब सरेंडर नहीं हुआ। होंगे,
और कब थोड़ा कम रहे कब तो कब कब कोई मुहूर्त, अभी पंचांग, अभी अच्छा दिन, आपका बर्थडे? वो देखते ही रहे हम। अच्छा दिन, अच्छा सब चले गया। So do it from now, this very moment. बस आप छोड़ दिए पूरा। कब? वो क्या बोलते हैं हिंदी में, उषा त्याग जी, कर दिए, सब कुछ त्याग ही कर दिए। और कुछ नहीं, अभी शरीर को ही जाना है, बस उतना ही। त्यागी त्यागी वो नहीं जिसको याद है कि उसने क्या त्याग किया है। क्या याद है तो त्यागी कैसे? उषा जी, मैंने इससे पहले कहा था that there was a person, he has left his home and he said, I have left my home for the past 12 years 13 days 23 hours. ये घर छोड़े कि घर को पकड़ के घूम रहे हैं नहीं पढ़ते नहीं। और अपने आप को त्यागी कहते हैं? त्यागी वो है, क्या बोल, वो क्या त्याग कर दिया उसे याद नहीं। जैसे आपने अपने सांसों को त्यागा, याद है क्या? नहीं है। आपके अंदर सब कुछ चल रहा है। जैसे एक सांस को त्याग देते हो, दूसरा अपने आप आ जाता है। जिस दिन आप उसके हाथ में सब छोड़ दोगे ना, अपने आप भेजना शुरू करेगा। लेट छोड़ हिम टेक देंगे। केयर, लेट मी नॉट इवन क्वेश्चन, लेट मी नॉट इवन आस्क ए डाउट। कैन यू फाइट दैट इट शुड नॉट रेन? बारिश हो रहा है, हो रहा है। और You cannot fight and stop the rain. But if you don't fight, you can enjoy the rain. If you fight, you will get wet. But if you don't fight, you will enjoy the rain and you will dance in the rain. So उषा जी, कौन था वो डिवाइन सोल? नाम मत बताओ, लेकिन आपके ऊपर खूब पड़े आज। मेरे ऊपर, मैं डिवाइन सर, मैं मेरे ऊपर कुछ नहीं होता। मैं माँ हूँ बोल लेना आप, माँ सबको सह लेते। वाह, अब जगह माँ माँ बोल रही है, अब माँ सह लेना पड़ता अभी। माँ तो खाली सहती है, शिव को तो जहर पीना पड़ता है। ऐसी कभी भी आपसे सवाल नहीं करे, उससे भी बात करना बोल के करे ऐसा। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो, इसके बाद से हम सेशन बंद कर देंगे। आप सवाल नहीं पूछ रहे बोले, अब कुछ ना कुछ तो पूछना है। मैं कभी भी नहीं पूछे, दिस इज द फर्स्ट I टाइम। don't want to answer you because you have to ask a question. You have a question, then I should answer. वो अंदर होगा शायद मेरा अंदर कभी, आज आपको आपके साथ मिल गया मेरे को। चलो, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। गुरुजी। कुछ ना कुछ तो मिले मेरे को, कभी नहीं पूछते, मैं अंदर होऊंगा इसलिए आया मेरे अंदर। चलो, थैंक यू। थैंक यू गुरु, थैंक यू। रेवती जी, Pranam Guruji. प्रणाम। I think it may be a very silly question, but I still want to ask you because after hearing all this conversation, this question has come up in my mind. We are talking about accepting what is coming in our way. Okay. That's what we just said, and we have to accept it, surrender, and that's it. While this was being conversed, I was just thinking that suppose an illness has come and we say to God that it's come, now we have to handle it. But Okay. at the same time, on the contrary side, we are also praying, we are also doing lots of, for example, when my husband fell sick, I was constantly asking people to do Mahamrityunjay Jap for him. You know, there were groups who were doing it, chanting. We were doing all of that. Okay. So, on the one hand, I was not as evolved as I am now. So, I was not what I am now then, 17, 20 years back. But that time it was a fervous
it was a constant thing of, if I pray it will happen, if I pray it will happen. So how does one surrender also? And how, and at the same time we also do all these things? Very good. Is it a very silly question? No, it's a very good question. I don't know. There is nothing called as a silly question. There can be a silly answer. But the question is how to manage between this, right? How does one surrender on one hand, and on the other hand we are also fervently praying, we are doing, with asking for a solution. We keep doing that. Even now, problem आया तो हम उसका solution तो ढूंढते ही है. Very good. Have you ever lived in a rented house? Yes. When you lived in that rented house, you might have done all the things that is required for that house: sweeping, wiping, dusting, cleaning, everything. But if there is a major issue with that house, are you worried, or you just change the house? You are not the owner. The owner is someone else. If there is a leakage on the roof, are you worried? No. You are not worried. Why? Because you know it is a rented house. Who should be worried about it? The owner, because he has to fix it up. Are you the owner of this? Are you the owner of this body? Or you are just in a rented house right now? As you live in a rented house, you clean, you dust it, you keep it clean and shiny. But it's not your house. So the owner should be worried about it. Why should I? The day you accept that you are in a rented house, then you take care, you do the mantra, you do the jap, you do the puja, everything. Just like here. And if there is a current failure and you are in the house, you suffer in that also. Because the current is not there today. Similarly, we're living in this world, all these things happen. But remember, it is just a temporary rented house. An arrangement with people for few years, an agreement might have been signed. But always remember, it's not your house. And if you can accept that, then go. If you are having a headache, I will never say that don't take medication. You should. Does that mean if I am a rented house, I will keep it as is? I'll not even sweep the floor? No. Understand one thing. Whether it is a rented house or not, I am beautiful. And wherever I stay, I will make it beautiful. So don't be the owner here. Because that's the problem. Every single crack on the roof, you will be worried. Arey, crack aa gaya. Yes or no? Very, very beautiful answer, sir. Not a silly one, right? Question may have been, but the answer was very nice. Now you see, that's how you have to understand your life. The better you understand it, the faster you accept it. And you see, when you accept it, it is a temporary phase or it is a rented house, you are automatically detached from it. And when you are detached, you are already free. I wish all these principles of living the way we talk on in this family can be all actually applied practically to even, to practical businesses. It would be so beautiful to do that. It would be so wonderful to run enterprises like this with this kind of philosophy, with this kind of thought process. But that's where we fail, Revati ji, na? Because we always operate from fear. Yeah. Can you see in your life, whatever you do, you are doing it out of fear, not out of expression. You go check anything in the world that you do. You're only doing it out of fear.
The day you change it from fear to choice, everything will change for you. The entire game will change for you. You will start playing another league altogether. Your Please orbit will change. give me one example of that. Tell me one thing that you have done without fear. I drive without fear. So No. There is a brake in your car. that's true. Very true. Now just think of you are driving without a brake. Not possible. You are fearful or not? Very careful. Now tell me anything that you have done not out of fear. Even you sitting here is also because of fear. Why would you say that? Just think of again. What if I miss this, and what if he said something? Something which I wanted to know. So, I wanted to know and he might have told that and I missed this. Can you see, even that is a fear? hmm. What is the solution? What is the solution? Choose. I am sitting here out of choice, not out of fear. If I close the camera right now, what will you do to me? You cannot do anything to me. That's We'll my keep choice. messaging you. We'll keep messaging you. I will not do question and answer sessions next week. What will you do? Nothing. But if I think, if I don't do the Q&A session, and if all these people will go away, then what will happen to me? I operated from my fear. But you see, we brush our teeth out of fear. We'll try to look good out of fear. We do our job out of fear. We take care of everything out of fear. I said, choose not live by fear. From this day on, whatever you are doing, look, am I doing it out of fear or it is a choice? And when you look at it, you can convert it into a choice. Without that, you are doing everything out of fear. You just see some people ask questions. Why do they ask questions? What if I don't ask question? What will happen? क्या हो जाएगा? Can you see how people are fearful? अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली, हाँ तो क्या? So what? नहीं मिली. But can you see, even you are trying to find a way towards your liberation out of fear. और यही बंधन है. This is exactly what Maya is. It will make you do all the things out of fear, not by your choice. When will you do all your by choice? When you realize who you are. Somebody asked me, Revati ji, you say that you are going to take us home and all those stuff, always. And how do you know the way to home? You know what I answered? I said, I am the home. पता उनका चाहिए जो लापता है, मैं स्वयं पता हूं. I am the address. Can you be like that? Tell that to yourself. Anyone in the room, if you can just state that one sentence, I am home. अगर आपने उस हद से अपने गहराई से एक बार बोला ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां से बात कर रहे हो. Tell that to yourself and you will realize, Revati ji, how powerful that statement can be. Tell that to yourself. Where are you? Who are you? I am home. मैं ही वो घर हूं. Thank you. Can you see all your fear disappear? That's how you live life. Complications will always be there. And you can get entangled into that. And certainly, Revati ji, there are certain kind of people, those who think I should not get entangled into the web of Maya, but they do. Have you seen a spider weaving?
its net? You must have seen that, right? How precisely it does that? From where does it got the geometrical knowledge? Which arithmetic class did it attended? It has not attended any classes. It has not taken any degrees. It just does it by its instinct. It knows it can do it. What do you think about yourself? You doubt everything, whether I can do it or not. But a spider never does that. It just does it, what it has to do. Yes or no? Aditi ji? उसे पता है वो कर सकता है, इसलिए वो कर देता है, और हमको सीधा लाइन खींचना नहीं आता. We can't even draw a straight line. Why? We doubt. Before even I start my pen, I start doubting whether I can draw a straight line or not. And you never draw a straight line. Because you have not realized yourself. I had sent you my, I sent you one long message. Yeah. Where? To my home address? No, you read it and got back to me also. So I have to now say to that also that I am home. I shouldn't be bothered about anything else right now. Even if you are worried, did you got a solution? No, You just were worried. होगा ही ना. माँ हो तो होगा ही ना. I'm worried. Then accept. I'll tell you, Revati ji, since my childhood, I have seen a person near my hometown. Every day he runs. Whether it is sunny day, whether it is winter, whether it is rainy, whether it is storm. Cyclone हुआ है, सुबह देखे तो फिर ट्रैक पहन के भाग रहा है. He's running in the morning. Recently, few years ago, I met him and I asked, why do you run? Even in all the seasons, despite the cyclone and all those things, you're still running. Why do you run? You know what he said? He said, because I'm a runner. So he will run. In your life also, people will be there. Those who will always keep on saying something to you. Accept them, they are that. They will never listen to you. Accept they are that. If you don't accept, then you go through pain. Yeah. And Gautam Buddha says, there is a statement for madness. Suffering for the doing of others. Suffering for the doing of others. किसी दूसरे ने गलती करी और आप उसका सजा भुगत रहे हो. And then your mind says, माँ हो ना तो ये सब चीज करना पड़ेगा. Who said you? Who gave you those examples? Who gave you those statements? I made it. Just like people say, just like this Revati ji, when they say संसार में है तो दुख में दुख के through ही जाना पड़ेगा. If you are in the world, you have to go through suffering and pain. No, you have already created suffering and pain within yourself, and that's what you are going to go through. And that's why Revati ji, I always speak. Even if you are going through hell, walk as if you are the owner of hell. You are the king of hell. There is a problem in that also. Itne problem mein, I'm only talking about my business problems. If somebody sees me and मेरे चेहरे पे उनको कुछ दुख दिखता ही नहीं है, so they keep telling me दुख तो हमें है, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. हाँ, पड़ेगा भी नहीं. रेवती जी, I want to do you realize that there were few years ago there might be a situation which you are very worried about? What happened to that situation now? And few years down the line, you will face a situation which will be very terrifying, or you might be saying, oh my God, what is happening? But will that last? Nothing lasts. But you are there. When the problem was not there, you are there. The problem is there, you are there. When the problem vanishes, you are still there. Why are you forgetting that this is just a temporary phase through which I am going through? All that happens is just happening in front of me. You are looking at the clouds, thinking it to be the sky. And I keep feeling that why should it be on my face what I'm going through? Let it be, it's okay, it's better I'm calm. I may be able to handle it better if I'm calm. इसीलिए कहता हूँ ना रेवती जी,
Those people think, they look at the clouds thinking it to be the sky. बादल आसमान नहीं है, आसमान बादल में चलते हैं. So Thank who are you. you? You are the sky and all the situations are the clouds floating. The sky is beyond the clouds. Thank you. So go live like that. And stop telling me the stories. माँ हूं ना इसीलिए ऐसा होगा. फिर फंसे. Okay? Okay. So thank you so much, Revati ji. Done. So Santoshi ji, no more questions from Sanvi. Oh my God, she got me into a fix last Sunday. We should listen to her question. Revati, you heard that question, what she asked? Chalo. So thank you everyone for being here today, and thank you for your questions. And I believe we should go on a vacation from this Q&A session until few people again go crazy and come back. So with this, we have come to the 75th Q&A session. So be on the lookout whether it will be there next time or not. Because when you are free, why should I bind you? And when you are free, and when I am free, why should you? So thank you so much for being here. Thank you so much for being there for the past 75 sessions. So up until we meet again, remember who you are. And if you have attained to the statement who you are, you have accepted yourself, there's no need of these Q&A sessions. And may you all live a wonderful, happy life ahead. And even I'm moving the 9-day process that I have thought of starting from 7th. It is not starting on 7th now. It is also moving ahead. When? I don't know. When the people will be ready, it will be declared. So thank you so much. Have a wonderful life ahead. And may the blessings of the Divine Mother always be there on you and your entire family. May you all be blessed. Aham Brahmasmi. Remember this word. And not just remember, be this. Thank you so much. And as Hari Bhai is still busy eating, I have to end it. So thank you so much. So I'm ending the session right now. Okay.